Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Basics of Technical Analysis as well as Technical Saturday series. दोनों ही सीरीज में आपका स्वागत है एंड दिस इज एपिसोड नंबर 15 इन बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमने पहले 14 एपिसोड्स में 7 स्टेप प्रोसेस को इन डेप्थ अंडरस्टैंड किया है विद व्हिच वी कैन हैव अ स्ट्रांग ग्रिप अबाउट टेक्निकल एनालिसिस इन द मार्केट एज वेल एज वी कैन हैव a profitable journey in the market in 2025 and in upcoming years as well. So the 7 step process is very simple, जिसमें it comprises of 7 steps, that is price, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, टाइम एंड सेंटिमेंट, जिसमें से टाइम एंड सेंटिमेंट अभी भी बाकी है. वी ऑलरेडी कवर्ड अप फर्स्ट 5 टॉपिक्स, जिसपे ऑलरेडी 14 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं. सो इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, न्यू टू आवर फेसबुक पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम. एंड इफ यू आर न्यू टू टेक्निकल एनालिसिस जर्नी एज वेल, तो प्लीज डू मेक श्योर दैट आप कोई भी सीरीज या फिर कोई भी वीडियो पे पहले जंप करने से you can straightforward jump into the series of basics of technical analysis, which जिससे आपको सारे जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं उसकी क्लैरिटी मिलेगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टिल द एडवांस. एंड माय मेन इंटेंशन टू क्रिएट दिस प्रोग्राम वाज ओनली वन सिंगल थिंग, दैट यू डोंट नीड टू गो थ्रू एनी ऑफ द पेड प्रोग्राम्स और एनी ऑफ द courses or any other thing in order to learn the basics of stock market. That's why I created this particular series absolutely for free of cost, right? So please do make sure that you do like whatever activities I'm mentioning, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, that you should watch every single video at least 2 to 3 times so that you can have a stronger grip of every single concept. Plus, you don't just have to learn the topics, you have to actually go to the market and you have to backtest charts, at least 50 to 100 charts every single day, and then you have to jump into the real-time market as well, right? So let's quickly have a look at what we have for today's day in terms of basics of technical analysis. राइट, सो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एपिसोड नंबर 15, जिसमें हम लोग टाइम एंड प्राइस पैरिटी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. राइट, सो टाइम काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एज वी ऑल नो, अगर हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसमें हमें दो ही चीजें मिलती है. फर्स्ट इज प्राइस एंड सेकेंड इज टाइम, जो राइट या लेफ्ट साइड में डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर विच यू आर यूजिंग. बट ये जो लाइन है, वर्टिकल लाइन जो होती है, वहां पे हमें प्राइस देखने को मिलता है, वेदर इट इज ऑफ एनी ऑफ द इंडेक्स और एनी ऑफ द स्टॉक. एंड जो नीचे का हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वहां पे हमें टाइमिंग देखने को मिलता है. नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर वो 5 मिनट चार्ट है, 15 मिनट्स, आवरली, वेदर इट इज डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, वो हमें नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके ऊपर क्लियरली दिख जाता है दैट कितने टाइमिंग में वो स्टॉक कितना बढ़ा या कितना घटा, या कितने टाइम में वो इंडेक्स, लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, कितना बढ़ा या कितना घटा. बेस्ड ऑन दैट वी एनालाइज दैट एज वेल, right? So as we have already discussed in terms of price action as well, that there are 3 types of trends. First is like normal trend, second is fast trend, and third is slow trend. उसके बारे में ही हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में. राइट, सो नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है? वेयर द एंगल इज 45 डिग्री, राइट? That's what the overall normal, whether it is normal uptrend or normal downtrend, is all about, where 1 unit of price goes up or down ड्यूरिंग 1 unit ऑफ टाइम. यानी कि 45 डिग्री जैसे होता है, कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स नॉर्मली ऊपर जा रहा है या नॉर्मली नीचे आ रहा है. दैट्स व्हाट द ओवरऑल नॉर्मल ट्रेंड इज ऑल अबाउट, वेयर 1 unit ऑफ प्राइस, अगर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में देखें, 1 unit ऑफ प्राइस मूव्स अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन दैट 1 unit ऑफ टाइम इटसेल्फ. राइट, सो दिस इज लाइक अ सिंपल 45 डिग्री angle, which is like a normal trend itself, which is like normal uptrend and normal downtrend. So let's quickly have a look at couple of examples. As you can see here, यहाँ पे जो है लगभग 45 to 50 डिग्री के बीच का एंगल है. यहाँ पे जो है नॉर्मल अपट्रेंड है, जहाँ पे 1 unit of price is moving up within 1 unit of time itself. Right, then we have one more example here. यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो 1 unit of टाइम जो 1 unit of प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है, 1 unit ऑफ प्राइस जो है वो कंप्लीट अप ट्रेंड में है, विच इज लाइक अ नॉर्मल डाउन ट्रेंड एंड देन नॉर्मल अप ट्रेंड इटसेल्फ. काफी बेसिक सा कंसेप्ट है. देन वी हैव वन एग्जांपल हियर, बिल्कुल नॉर्मल सा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऑलमोस्ट 45 टू 50 डिग्री का, वेयर 1 unit ऑफ प्राइस इज गोइंग डाउन विद इन दैट 1 unit ऑफ टाइम इटसेल्फ. राइट, देन वी हैव वन मोर एग्जांपल ऑफ डेली चार्ट, 45 डिग्री का डाउन ट्रेंड. राइट, सो दैट्स व्हाट द ओवरऑल कंसेप्ट इज ऑल अबाउट. देन वी हैव another concept that is fast, that is faster trend. Again, यहाँ पे जो है फास्ट अप ट्रेंड भी आता है, फास्ट डाउन ट्रेंड भी आता है. सो फास्टर ट्रेंड कब बनता है? when 2 units of price moves within 1 unit of time itself. यानी कि कोई भी स्टॉक एकदम फास्ट अप ट्रेंड में जाता है या फास्ट डाउन ट्रेंड में जाता है, तो वो स्मॉलर स्पैन ऑफ टाइम में जाता है. राइट, सो दैट्स व्हाट द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ फास्टर ट्रेंड इज ऑल अबाउट. अगेन यहाँ पे जो है 2 units ऑफ प्राइस गोज डाउन विद इन 1 unit ऑफ टाइम इटसेल्फ. अगेन यहाँ पे जो है
टाइम एंड प्राइस पैरिटी कैसे आता है? लेट्स अज्यूम अभी 2 यूनिट्स ऑफ प्राइस चल चुका है, सो देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर 2 यूनिट्स ऑफ प्राइस, लेट्स अज्यूम प्राइस जितना भी फास्ट ऊपर गया है या जितना भी फास्ट नीचे आया है, आफ्टर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट वो पर्टिकुलर इंडेक्स या वो पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाएगा या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा, एंड देन इट विल मूव अप और इट विल मूव डाउन डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड एंड डिपेंडिंग ऑन द overall scenario, right? So let's have a look at one example here. As you can see, daily chart पे फटाफट से स्टॉक ऊपर गया एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कंसोलिडेशन ट्रेंड इटसेल्फ, राइट? देन वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर. ऑलरेडी एक्चुअली देखा जाए तो ये नॉर्मल अप ट्रेंड था, बट विद इन दैट नॉर्मल अप ट्रेंड एक फास्ट रैली आई एंड आफ्टर दैट इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कंसोलिडेशन ट्रेंड इटसेल्फ, राइट? देन वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर. यहाँ पे जो है फास्ट डाउन ट्रेंड का है, यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ प्राइस जो है वो नीचे आया एंड विद इन 1 यूनिट ऑफ टाइम इटसेल्फ, एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कंसोलिडेशन ट्रेंड, जहां पे जो है टाइम एंड प्राइस हैव टू मीट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टाइम एंड प्राइस पैरिटी. देन वी हैव वन मोर एग्जांपल. एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो 2 एग्जांपल्स विद इन वन चार्ट इटसेल्फ, फास्ट डाउन ट्रेंड एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ साइडवेज रैली, राइट? Then we have the third concept within time and price parity. जैसे कि एक normal trend होता है where the angle is 45 degree. Fast up trend जो होता है where the angle is beyond 70 and 75 degrees as well. And slow trend कैसे होता है where the angle is roughly around 20, 25 and maximum 30. Right? तो slower trend में कैसे होता है where 1 unit of price is moving within 2 units of time, यानी कि कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक काफी ज्यादा टाइम ले रहा है टू रीच अप टू सर्टन डेस्टिनेशन और टू रीच अप टू सर्टन मार्क, राइट? सो दैट्स व्हाट अगेन यहाँ पे जो है फास्ट अप ट्रेंड का है. एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा जहां पे जो है 1 यूनिट ऑफ प्राइस इज गेटिंग मूव्ड विद इन 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी कि वो स्टॉक या वो इंडेक्स नीचे आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है. ऑल्दो ये जो सेकंड सिनेरियो है वो काफी रेयर होता है व्हेन इट कम्स टू रिसेशंस और समथिंग अराउंड दैट, जहां पे मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है तब ये सिनेरियो बनता है. बट व्हेन इट कम्स टू अ टिपिकल डाउन ट्रेंड, वहां पे हमें फास्ट मूवमेंट ही देखने को मिलती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड इटसेल्फ. इतने साल लग गए फॉर मार्केट टू बाउंस बैक एंड टू रीच दोज ऑल टाइम हाई जोन्स, बट इट took couple of days to reach from that all time high zone to the bottom of covid itself. बहुत ही फास्ट वे में डाउन ट्रेंड हुआ था, राइट? तो ये जो है सेकंड कंसेप्ट जो है स्लोअर डाउन ट्रेंड जो है वो काफी रेयर होता है, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, द एंगल लाइज बिटवीन 20, 25 मैक्सिमम 30, जहां पे 1 यूनिट ऑफ प्राइस गेट्स मूव्ड ऑन द अपर साइड और ऑन द लोअर साइड विद इन 2 यूनिट्स ऑफ टाइम इटसेल्फ, यानी कि वो बहुत स्लो अप ट्रेंड होता है और बहुत स्लो डाउन ट्रेंड भी होता है. वन मोर एग्जांपल हियर. प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट बहुत स्लो जा रहा है. देन वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर, विप्रो डेली चार्ट. यहाँ पे काफी स्लो डाउन ट्रेंड है. एंगल जैसे कि मैंने बताया 20, 25 और मैक्सिमम 30 डिग्रीज. यहाँ पे जो है प्राइस तो नीचे जा रहा है बट बहुत स्लोली जा रहा है. वन मोर एग्जांपल, औरो फार्मा. यहाँ पे भी प्राइस नीचे तो जा रहा है बट बहुत स्लोली जा रहा है, एंड दैट इज हाउ अगेन यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने फास्ट अप ट्रेंड और फास्ट डाउन ट्रेंड का बताया कि कोई भी स्टॉक, लेट्स अज्यूम अगर कोई फास्ट अप ट्रेंड या फास्ट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, आफ्टर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट वो कंसोलिडेशन ट्रेंड में चला जाता है या थोड़ा सा उसमें करेक्शन आता है. सिमिलरली जब स्लो अप ट्रेंड या स्लो डाउन ट्रेंड होता है तो वो मूवमेंट के बाद, वो कंसोलिडेशन के बाद, वो एक्यूमुलेशन फेज के बाद, इट गिव्स अ वन साइडेड रैली whether on the upper side or on the lower side depending on the overall market scenario and the overall performance of the sector and the stock as well, right? So that's what the overall concept of time and price parity is all about. I hope that you're absolutely clear with this overall concept, and I hope that you are all clear with the 7 steps which I've already shared. Already 6 steps हो चुके हैं. Sentiment काफी simple है. Sentiment is nothing but the overall you can consider overall emotions of the people trading in the market. Let's assume जैसे कि last year election के time पे हुआ था, बिफोर द डे ऑफ इलेक्शन एवरीबडी वाज पॉजिटिव कि ऐसे होगा वैसे होगा, बीजेपी आएगी एंड इतने नंबर ऑफ सीट्स उनको मिलेंगे. बट अगेन नेक्स्ट डे जब वो उस एक्सपेक्टेशन तक रीच आउट नहीं हो पाए थे, देन द सेंटिमेंट गॉट नेगेटिव एंड द मार्केट गॉट on the lower side and so on. So that's what the overall concept of sentiment is all about. But जैसे कि मैंने बताया, टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दिस. अगेन फिबोनाची टाइम का भी कंसेप्ट है व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इन दिस एपिसोड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी नॉट लर्न दैट टॉपिक. तो आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट शो ऑफ दैट आई नो फिबोनाची टाइम बट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एंड सो ऑन. मुझे आता ही नहीं है, मैंने अपने मेंटोर से सीखा ही नहीं है, एंड जो मैंने अपने मेंटोर से नहीं सीखा है, जो मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट नहीं किया, दैट्स द कंसेप्ट व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एट ऑल, even in my paid community, even for free as well, because that's what I've learned from my mentors, that जो हम
सीख रहे हैं, जो हम खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे हम रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, वही हमें शेयर करना चाहिए, रादर देन लाइक अ शैलो नॉलेज जैसे होता है कि मैंने कुछ रीड कर लिया एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड आई शेयर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस जो भी मैंने अभी इस सीरीज में शेयर किया है पिछले 15 एपिसोड्स में, every single thing I have already implemented in my own journey. I have created results for my own self. I have created results for our paid members as well. And then only I'm sharing this for absolutely free. Right. So I hope that you are absolutely clear with my intention as well. Right. So if you have got any of the value from this epic episode or from this overall series of basics of technical analysis, do share all of your takeaways below this particular video. And if possible, do share this particular series with at least one friend of yours, which can like who can actually get maximum value from this series as well. Right. And I'll see you tomorrow in weekly mastermind, जहां पे हम लोग ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें अगले हफ्ते क्या करना चाहिए. दैट्स व्हाट वी विल एनालाइज इन टुमारोज एपिसोड. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. Till then, make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.